Good evening, class. Last lecture we are started the unit 5 statistic. In that unit we are finding the range of distribution and also finding coefficient of range. Now in this lecture we are studying mean deviation. Now let's see mean deviation. Mean deviation. It is an absolutely measure of dispersion. It is the arithmetic mean of the absolute derivation for any one of its average, mean and median. Mean and median. Mean deviation means it is absolutely measure of dispersion. It is arithmetic mean of all the absolute derivation of any one of its arrangement, mean and median. Mean and median. Mean deviation for row data, only for in one row data. First, this is the finding mean deviation about mean, and second is mean deviation about median. हमको ऐसा सम दिया होगा कि कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ मीन. सो यूजिंग मीन यूज करके होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीडियन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ध्यान में रखो यहाँ पे कि फाइंडिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड हियर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर रो डाटा. Mean deviation about mean, summation of xi minus x bar in a mod divided by n is equal to summation of in mod di divided by n. Here x bar is a mean. X bar is a mean of n observation, and di is a xi minus x bar, means di is a xi minus x bar, and x bar is a mean of n observation. And second for mean deviation about median. For a median mean deviation फाइंड करना है यूजिंग मीडियन से. सो समेशन ऑफ xi माइनस me divided by n is equal to summation of in mod di divided by n. Here me is the median, because of this me is the median, and here x bar is the mean of an observation. So this for row data. Only change mean by using mean and by using median. So change by mean. हमको चेंज करना है यहाँ पे मीन एंड मीडियन, एंड ऑल आर both are same. So these two formula using finding the mean deviation for row data. Now second, here also mean deviation for discrete frequency distribution means ungrouped data. So this one MD means mean deviation about mean, here for mean and here for median. Finding MD means mean deviation about median and mean deviation about mean. So in this one, first we can take mean deviation about mean, summation of fi in mod xi minus x bar divided by summation of fi is equal to summation of fi in mod d. We know that d is equal to xi minus x bar divided by n. So n is equal to summation of fi and di is equal to xi minus x bar. We know that x bar is a mean. X bar is a mean. Now this for a mean deviation for discrete frequency distribution.
Now this mean deviation about median. So summation of fi in a mod xi minus mean me divided by summation of fi is equal to summation of xi in mod di divided by n. Here we know that m is equal to median. So this for finding mean deviation about mean, and this is mean deviation about median ungrouped data. And this one mean deviation for group frequency distribution, and here ungrouped frequency distribution. So here this for group frequency distribution. First is mean deviation about mean by using here mean. So mean deviation about mean is equal to summation fi in mod xi minus x bar divided by summation of xi. We know that this is a mean is equal to summation of fi in mod di divided by n. Di means xi minus x bar, where xi is a mid value or class mark. This is a in group frequency. In a group frequency means continuous frequency. So group frequency xi is a mid value, means mid value or class mark, and x bar is a mean. Now second, mean deviation about median, that is summation of fi in mod xi minus me is the median divided by summation of fi is equal to summation of fi in mod di. We know that di is a xi minus me and divided by n. So m is equal to median of distribution. We know that is a फाइंड करने का है मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड xi इज अ मिड वैल्यू. दिस इज द xi इज अ मिड वैल्यू in the group frequency. We find xi, that is the mid value. So start example. First one, find the mean deviation of 7, 14, 9, 12 and 8. So these are in a row form, means this one. So using these and this formula for finding mean deviation, because they are in a row. So given data is a row, only observation are given. Mean deviation is equal to summation of di divided by n. We know that di divided by n, and where di is a xi minus x. So x bar is the mean of an observation. And here n is equal to 5. How can that possible? 1, 2, 3, 4 and 5. Here 5 values, so n is equal to 5. अगर यहाँ पे 6 होगा और एक वैल्यू रहेगी तो n is equal to 6. But here only there are 5, 1, 2, 3, 4 and 5. So n is equal to 5. So mean x bar, we know that x bar is equal to mean. So mean x bar is equal to summation of xi means whole plus n means divided by 5. So 7 plus 14 plus 9 plus 12 plus 8 divided by 5. They give 7 plus 14 plus 9 plus 12 plus 8 is equal to 5. Means 15 divided by 5, they give 10. So mean x bar is equal to 10. Now we want to find
अभी हमको क्या फाइंड करना है, इन दिस वन डी आई। अभी हमको एक्स बार मिल गया, अभी हम एक्स आई हमारे पास है वो है, तो हम अभी डी आई फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डी आई। So table for mean deviation, this table for mean deviation, so we write here mean deviation. So xi, we know that 7, 14, 9, 12 and 8 they are given. Then di means xi minus x bar, we know that x bar means mean, so 7 minus 10, that is value is minus 3, but here mod, so they get positive 3, so 3, 14 minus 10 is 4, 9 minus 10 is minus 1, but in a mod, so they get 1, so 12 minus 10 means 2, and 8 minus 10 here, so minus 2, but they are in a mod, so plus 2. So sum of these, we want sum of di na, so sum of xi minus x bar, 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2, that is 12. So mean deviation is equal to sum of xi minus x bar is equal to n, means sum of mod of di divided by n. So 12 divided by 5 means mean deviation is equal to 2.5. हमको mean deviation about mean find करना था, so that is this mean deviation is equal to 2.4. Now calculate mean deviation about mean and median of the following distribution. These are distribution, this is in a ungrouped data, ये ungrouped data में दिया है, this is all, so using this formula, which one, these two formula, हमको अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन भी बोला है, तो दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एफ, समेशन ऑफ एफ आई, एंड फॉर मीडियन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम ई divided by summation of fi. This is already given, xi of this and fi means frequency of this number of students are given. So first we are finding mean deviation about mean. We are finding first one, that is mean deviation about mean. For observation x, observation is x and frequency is f are given, hence the data is a ungrouped frequency distribution. So this is a ungrouped frequency distribution. Mean deviation about mean, that is summation of fi in mod xi minus x bar divided by summation of fi. This is a formula for finding mean deviation about mean. We know that x bar is equal to mean divided by mean is equal to summation of fi xi divided by summation of fi. This is a formula for finding mean. ये लिख के रखो, mean कैसे फाइंड करता है, x bar means mean is equal to summation of fi multiply by xi, इसका multiplication का sum divided by sum of fi, means इसका multiplication and then sum means addition करने का divided by frequency का addition, means sum of frequency. So table for mean deviation about mean, अभी हम mean के लिए फाइंड कर रहे हैं. So table for mean deviation about mean, so that is a given x are given and fi, this is frequency also given, this is 9,
4, 9, 10 and 8, 6, 3. Then fi multiplied by xi, so 3 multiplied by 4 is 12, so 4 multiplied by 9 is 36, 5 multiplied by 10 is 50, so 6 multiplied by 8 is 46, 7 multiplied by 6 is 42 and 8 multiplied by 3 is 24. Now in this one we want to find the mean, so sum of fi and summation of fi multiplied by xi. So it first take sum of this, means 4 plus 9, 9 plus 4 means 4 plus 9 plus 10 plus 8 plus 6 plus 3, that is 40, and here also 12 plus 36 plus 50 plus 48 plus 42 plus 24, that is 212. So these are given. Now ये हमको मिल गया, that is mean. अभी हमको फाइंड करना है कि xi minus x bar, that is d. So we write here di is equal to xi minus x bar. हमको x bar मिल जाएगा ये डिवाइड ये करके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे xi minus x bar, एंड हमको क्या चाहिए फिर सम ऑफ दिस मीन्स fi multiplied by this, so fi multiplied by this one xi minus x bar. So हम फर्स्ट फाइंड करेंगे mean, that is x bar is equal to summation of fi xr. So sum of fi xi is 212 divided by 14, that is 5.3. This is a 5.3. So now this is 212 divided by 14 means 5.3. In this one xi minus 5.3, they gives minus 2.3, but here mod is positive, so right here, so xi minus mean, that is 5.3, so 5 minus 5.3 is 0.3, 6 minus 5.3 is 0.7, 7 minus 5.3 means this one, here 8 minus 5.3, so they give 2.7. So this is a di, means xi minus x bar. Now we want fi multiplied by this mod, means 4 multiplied by 2.3, they give 9.2. Now 9 multiplied by 1.3, they give 11.7, and 10 multiplied by 0.3, so they give 3, and 8 multiplied by 0.7, they give 5.6, and 6 multiplied by 1.7, they give 10.2, and 3 multiplied by 2.7, they give 8.1. We want now sum of these one, so we take summation of f multiplied by xi minus x1, so whole sum सबका एडिशन करेंगे तो 47.8 आएगा, means 9.2 plus 11.7 plus 3 plus 5.6 plus 10.2 plus 8.1, so they give 7.8. So अभी हमको fi मिल गया, fi summation of fi is 40, and summation of fi multiplied by xi minus mean, that is 47.8. Now put the value of this, so mean deviation about mean, so 47.8 divided by 40 is equal to 1.195. Mean deviation about mean, that is 1.195. This is the value of mean deviation about mean, 1.195. Now अभी हमको सेकेंड फाइंड करना है मीडियन, so mean deviation about median, so find mean deviation about median. तो इसके लिए हमें अभी फर्स्ट मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हम फर्स्ट लिखेंगे जो दिया हुआ है वो दिल्ली का xi and number of students, and here cumulated frequency less than means fc, we know that fc, वो cumulative frequency हम कैसे लिखेंगे, by using frequency के. So here 4 plus अब कौन सी वैल्यू नहीं है, मीन्स 4 plus 0, that is 4. Now 4 plus 9, they give 13. Now 4 plus 9 plus 10, so
so they give 23. Now here 4 plus 9 plus 10 plus 8, so 31. Here also, then 4 plus 9 plus 10 plus 8 plus 6, so they give 37. Now 4 plus 9 plus 10 plus 8 plus 6 plus 3, so they give 14. So this is the cumulated frequency. Now इस सब की एडिशन मीन्स समेशन ऑफ fi हो गया ना, हम उसको n भी कहते हैं. सो n इज इक्वल टू कैपिटल N ना, सो कैपिटल N इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज द cumulated frequency. सो n by 2 दैट इज 20, क्योंकि हम अभी मीडियन फाइंड कर रहे हैं बाय अनग्रुप डाटा के लिए. हाँ, ये भी हम अनग्रुप डाटा के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए. अभी हम फर्स्ट हम उसको वैल्यू n निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज समेशन ऑफ fi मीन्स फ्रीक्वेंसी की सम, दैट इज इक्वल टू n. 40 है, सो n by 2 इज इक्वल टू 20. सो अभी हम उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में 20 वैल्यू है क्या नहीं. तो इधर 20 वैल्यू नहीं है, सो जस्ट ग्रेटर दैन 20 बिकॉज ऑफ दिस वन हमने फाइंड किया n by 2 20 आई, बट 20 वैल्यू इसमें नहीं है क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में. तो हम उससे ज़्यादा वाली मीन्स जस्ट ग्रेटर दैन मीन्स उससे थोड़ी सी ज़्यादा, सो दैट इज 23. 31 भी ग्रेटर है, बट 23 इज नियरली 20, so just greater than 20, that is 23. So this is the median class. कैसे फाइंड किया, पहले इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए. फ्रीक्वेंसी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए हमको, क्योंकि ये मीडियन फाइंड करने के लिए. अब ये फाइव इज अ मीडियन बिकॉज ऑफ दैट इज 23 जस्ट ग्रेटर देन 20, दे 23. सो हम अभी xi में ढूंढेंगे, दैट इज 5. सो 5 इज अ मीडियन, इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए. और फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, 4 एंड 4 प्लस 9 देन 4 प्लस 9 प्लस 10 23 सबका एडिशन करके गए, तो हमें कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी मिल गई. नाउ समेशन ऑफ fi दैट इज n एंड n डिवाइडेड बाई 2, जो n डिवाइडेड बाई 2 आता है उसकी वैल्यू हम कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में नोट डाउन करेंगे, वो वैल्यू है या नहीं है. अगर वो है तो उस दैट इज अ मीडियन क्लास, वो मीडियन क्लास हो जाता है, वो एक रो मीडियन क्लास हो जाता है. और उसका xi दैट इज अ मीडियन, बट वहाँ पे वो यहाँ पे 20 नहीं है, n by 2 की वैल्यू 20 यहाँ पे नहीं है, तो हम जस्ट ग्रेटर लेंगे, मैं उसका थोड़े से ज़्यादा लेंगे, दैट इज 23. तो ये मीडियन क्लास हो गई. तो उसका x इज 5, सो 5 इज अ मीडियन. सो ये मीडियन है, ये अच्छी तरीके से ध्यान दो. मीडियन इज द वैल्यू ऑफ xi corresponding to cumulated frequency. So median is the value of xi corresponding to cumulated frequency. से हमने उसको फाइंड करेंगे. cumulated frequency n by 2 that is 20. We know that is a 20. So there is a no value in the table that has a cumulated frequency n by 2. यहाँ पे 20 नहीं है कहीं किधर भी इन कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी, मीन्स इन कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी के टेबल में 20 वैल्यू नहीं है, मीन्स n by 2 नहीं है. वी चूज द वैल्यू ऑफ correspond to cumulated frequency just greater than n by 2 मीन्स 20. n by 2, हाँ मैं 20 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमको n by 2 की वैल्यू 20 आई है, इसलिए हम just greater than n by 2 means 20. So that is 23.
that is 23. So which is 23 and the value corresponding to cumulative frequency 23 is 5. So वो कहाँ पे आती है 5 में, xi की वैल्यू that is 5 है. So इसलिए मीडियन इज 5. इनोबो हमने कैसे किया, मीन फाइंड करने के लिए हम अलग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे. बट हियर मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसके लिए फर्स्ट हम कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी पहले जो दिया है वो सब लिखेंगे, बाद में कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. और कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, 0 + 4 मीन्स 4, 4 + 9 मीन्स दिस, 4 + 9 + 10 दिस इज 23, 4 + 9 + 10 + 8 that is 31, and 4 + 9 + 10 + 8 + 6 that is 37, and 4 + 9 + 10 + 8 + 6 + 3 that is 40. सो ऐसे हम कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. देन सम ऑफ fi मीन्स n मीन्स इसका सम पूरा 4 + 9 + 10 + 8 + 6 + 3 that is 40. सो n इज इक्वल टू 40. नाउ अभी हम n/2 करेंगे बिकॉज हमको मीडियन फाइंड करनी है, इसलिए हम n/2 करेंगे. अभी हम n/2 कंपेयर करेंगे कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में कि वैल्यू है या नहीं है. सो बस कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में 20 वैल्यू नहीं है, सो उसके जस्ट ग्रेटर देंगे, जस्ट ग्रेटर 20 मीन्स जस्ट ग्रेटर n/2 दैट इज 23. सो मीडियन की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, xi से लिखेंगे. सो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ xi, हम xi से लिखेंगे. सो हमने जस्ट ग्रेटर देन 23 इज द जस्ट ग्रेटर देन ऑफ 20. सो दिस इज द मीडियन क्लास. एंड तो हमको मिल गया मीडियन दैट इज xi इज 5. तो हमने इस तरीके से मीडियन फाइंड कर लिया 5. नाउ दिस आर x एंड fi देर आर गिवन एंड हमने mi फाइंड कर दिया है. सो di इज इक्वल टू दिस minus 5, they give 2 minus 2, but in a mod so we write plus 2. Now 4 minus 5 that is 1, 5 minus 5 0, 6 minus 5 1, 7 minus 5 2, 8 minus 5 3. 5 कहाँ से निकला, in this way median. We know that how to find it. now अभी हमको क्या फाइंड करना है, fi in mod xi minus xc. We know that summation of fi in mod xi minus me divided by summation of fi. So अभी हम 4 × 2 करेंगे तो ये मिलेगा. So 4 × 2 that is 8 because of this one. So now multiply by 1 is 9, 10 multiplied by 0 means 0, 8 multiplied by 1 is 8, 6 multiplied by 12 and 3 multiplied by 3 is 9. So अभी हम इसका सम लेंगे, मीन्स सम ऑफ दिस. सो समेशन ऑफ fi xi minus me is equal to 46 and we know that summation of fi is 40. So now median deviation about median, mean deviation about median, that is summation of fi xi minus me divided by summation of fi. So fi is, and we know that, so 46 divided by 40 means 1.15. So mean deviation about median is 1.15. Now got it, mean deviation about median and above फाइंड किया mean deviation about mean. इसमें हम फर्स्ट मीन फाइंड करेंगे एंड इसमें फर्स्ट मीडियन फाइंड करेंगे, तभी हम ये वैल्यू मिलेगी, तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं. देन हमको मीन डिविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीन मिलेगा. नेक्स्ट एग्जांपल, सो कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन. यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट मीन फाइंड कर रहे हैं, तो हम मीडियन नहीं फाइंड करेंगे, एक ही फाइंड करेंगे, दैट इज मीन. And this is in a continuous way, so that is a group frequency. So this is a group frequency. So calculate mean deviation about mean of the data class interval. This is
class interval 0 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and frequency is 15, 18, 21, 70 and 21. So now here data is a group, we know that. So using group data, above अभी हमने पढ़ा वही फॉर्मूला यूज करेंगे. मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. अभी हम इसके लिए एक्स आई इज अ मिड पॉइंट, हमने फॉर्मूला पढ़ा तभी वेयर एक्स आई इज अ मिड पॉइंट एंड एक्स बार इज अ मीन, वी नो दैट. सो अभी हमको इसका एक्स आई का मिड पॉइंट निकलना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. एंड अब वो एग्जाम्पल में क्या था, वो ग्रुप था तो वो मिड पॉइंट ही था. अभी इज अ डाटा इज अ ग्रुप, सो अभी इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट. एंड मीन हमको पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ऑफ सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई. नाउ टेबल फॉर mean deviation about mean. So class interval that is given these one, and frequency this one. How to find mid value? Both addition of both divided by 2 means 0 plus 10 divided by 2, that is 5. So now here 10 plus 20, that is 30 divided by 2 means 15. Now here 20 plus 30 divided by 2, 25. Now here also 30 plus 40 divided by 2, that is 35, and 40 plus 50 divided by 2, they gives 45. So हम ऐसे मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, so they give mid point. So these are a mid point means xi. Now frequency, this is a given frequency, और हमको अभी मीन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए. सो समेशन ऑफ एफ आई मीन्स एन, वी नो दैट समेशन ऑफ एफ आई मीन्स एन. सो 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 12 दे गिव 83. नाउ अभी हमको इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए. सो एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, सो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 दे गिव 75. सो 18 मल्टीप्लाई बाई 15, सो दे 217. 21 मल्टीप्लाई बाई 25, so 525 means 525, and 17 multiplied by 30 they gives 595, and 45 multiplied by 12 so 540. उसका भी समेशन चाहिए. सो सम ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज 2005. और हमको ये फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एफ आई मल्टीप्लाई बाय दिस वन. सो पहले हम ये इन मॉड वाला फाइंड करेंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मॉड मीन्स di is equal to in mod xi minus x bar means mean. तो वो लिखेंगे और लास्ट में समेशन चाहिए xi. सो दिस वन मल्टीप्लाई बाय f means f मल्टीप्लाई बाय दिस वन. सो फर्स्ट फाइंड मीन मीन्स x bar. सो वी नो दैट मीन्स ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. सो 2005 डिवाइडेड बाय 83, this is the 24.156. we know that जब ये 5 होगा, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आगे वाले टर्म में एक ऐड कर देंगे, दैट इज दिस इज अ सिमिलरली टू दिस वन, दिस आर सिमिलर, एक ऐड कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा. सो 24.16, दिस इज अ मीन. So mean deviation about mean, that is summation of fi mod of xi minus mod x bar divided by summation of xr. So first हमको summation of ये चाहिए, summation of ये तो हम first ये फाइंड करेंगे. अभी हमको mean मिल गया है, मीन्स बार x बार मिल गया 24.16. So xi we know that this is the xi minus 24.16
16 माइनस किया, सो माइनस में आएगा -19, बट हियर मॉड, सो दे गेट पॉजिटिव. सेम xi minus x bar, they give these. Now this minus this, and 24 minus 20, 24 minus 45 minus 24, they give 20.48. Now these multiply by fi, because fi multiply by these one, so 15 multiply by 19, 285. Now here also 18 multiply by 9.16 to give 164, but 21 multiply by these one, 17 multiply by these, and 12 multiply by these. So they give these value, means fi multiply by in a mod xi minus x bar. So summation of these one, they give summation of these, so 904.28. So हमको summation of these value and this value मिल गई. So put in this one. So mean deviation about mean summation of fi in a mod xi minus x bar is divided by summation of xi. 904.28 divided by 83, so 10.89. Here 83, so 83, and mean deviation about mean is 10.89. So now in this example also, these are a group data and finding mean. इसमें भी mean find करने के लिए बोला है. So find a mean deviation of the following distribution. So the class interval and frequency are given, hence data is a group data, we know that. So mean data, mean deviation is equal to summation of fi xi minus x bar divided by x, summation of xi. This is a same example of अभी हमने वो सॉल्व किया था, सेम है. एंड हियर वी नो दैट x bar is equal to mean summation of fi xi divided by summation of xi, and xi is the midpoint. So this is a mark, we know that this is a mark. So find first midpoint, so this addition divided by 2, so 5, this is also same. Take this is the midpoint and this is the frequency. Now multiply by fi and xi, so they give this, and sum of fi means 5 plus 8 plus 15 plus 16 plus 6 is equal to this, and sum of this, so give this. Then we can find median. So summation of fi xi means 1315 divided by 15, so they give 27. हमने मिड पॉइंट फाइंड किया क्लास इंटरवल से. दिस वन add of these two term divided by 2, so they give this, and di we know that di means xi minus x bar. We know that this is a xi means 5 minus 27, so they use minus 22. in a mod we write 22. so ये टेबल में ये चार्ट नहीं लिखेगा तभी चलेगा, because we write direct plus 22 and here minus 22, so they get in a mod, so plus 12, and here also plus 2, 8 and 18, क्योंकि हमारा टाइम चला जाएगा. पहले डी आई लिखो, बाद में मॉड डी आई लिखो. सो डायरेक्ट वी कैन राइट प्लस 22, 12 plus 2, 8 and 18. Now fi multiply by d, fi multiply by d, so 5 multiply by 22, they use 110, 8 multiply by 12, 96, 15 multiply by 2, that is 30, 16 multiply by 8, that is 128, and 6 multiply by 18, that is 108. So sum of these one, they give these. So we have these and these. So mean deviation about mean, summation of fi xi minus x bar divided by summation of fi. So 472 divided by 15 means 9.44. So mean is equal to 27. We know that mean is equal to 27, and mean deviation is equal to 9.42. This is for you homework. This is the find the rank and coefficient of rank. This is very simple. And calculate mean deviation about following both mean and median,
and here only you find the mean. So this is for you for homework. This unit is very easy. ये यूनिट बहुत इजी है बट बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो अभी हम इधर रुकते हैं बिकॉज नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नाउ वी आर स्टॉप हियर. इसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको इजी जाएगा ये पेपर.